pray for the purification of this ego and aspire for true ego of your sincere servant. My false ego pushes many complaints of ingratitude, but your shining example conquers your unworthy servant, Maharaj Das. So today morning, when we were hearing Maharaj's lecture, just another thought came to my mind that my false ego is like my beard that keeps naturally growing, and Maharaj's lectures are like razor. If we don't shave, it grows bigger and bigger. It looks ugly. If we keep hearing Maharaj's lectures, then it is in control, and we remain clean. So thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. Let's give Maharaj Prabhu ki jai. Now I request Sridhar Prabhu to make his offering. Shri Govind Ghosh Prabhu to be ready, and next His Grace Prem Sarup Prabhu to be ready. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Radhanath Swami Namane Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashyati Vistarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Vanchakalpataruvashakapas Hare Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he attempts to go to Sri Vrindavan Dham, so first attempt of Sri Chaitanya Mahaprabhu is an apparent failure of Sri Chaitanya Mahaprabhu is not able to go to Vrindavan Dham, and he returns back to Jagannath Puri, and Krishnadas Kaviraj Goswami says that Sri Chaitanya Mahaprabhu says to Swarup Damodar and all the devotees, Ramananda Raya and everyone in Jagannath Puri, that though I could not enter Vrindavan Dham, but my going to Sri Vrindavan Dham was successful because I met two illustrious souls, Sri Rupa and Sanatana. And when when Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke about Rupa and Sanatana, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, and the parameter for how illustrious they are is that though they have so much qualities, they are so humble. So in my own life, actually being born in Jagannath Puri, I had great desire for practicing spirituality. But because of all the what happens in the mathas and everything in Puri and all, I had lost all faith that there can be anyone who can be pure and there can be any organization that can be pure. Practically, it was like complete faithlessness. I had a lot of desire to actively practice spirituality. And when I came in touch with His Holiness Radhanath Swami Maharaj, I could understand that here is a person who is not just representing an organization, he's representing the entire principle of saintliness. So this was my first realization when I came in touch with His Holiness Radhanath Swami Maharaj. My first interaction with Maharaj was a lecture called Power of Enquiry, which we all hear or we give to our boys. And I can honestly say I could understand nothing from that lecture because Maharaj's accent was so not, it's very English accent, and I am from Odisha, and though I studied in English medium school, I was not in conversation and
I could not understand English that well. So, but when I met Maharaj in Pune Yatra and also in the Yatras, and saw how Maharaj deals and also Maharaj's classes, slowly, I was able to understand the accent and everything, the depth of it. I understood that Maharaj is not just uh, Guru, is not just, yes, Maharaj is Guru, Maharaj is GVC, but Maharaj actually is representation of saintliness, representation and personification of saintliness. And as Sri Chaitanya Mahaprabhu said, कि his Vrindavan Yatra was a failure, but his purpose of going to Vrindavan was successful because he met Rup Sanatan. So similarly, we really don't know whether we'll be able to perfect our lives this life. But we should understand that our life is already perfect because we have come in touch with such a wonderful saint. And we have come in touch with his classes, with his wonderful association. So recently I completed Brihad Bhagavatamrita. So when Brihad Bhagavatamrita gets completed, Gopakumar, the person, he actually infuses his love to another Brahmana who has come from Assam, from Kamakhya, whose name is Jana Sarma. So when this Jana Sarma, by the association of Gopakumar, who is also known as Swarup in spiritual realm, when Jana Sarma becomes completely enlivened in Krishna consciousness by the association of Swarup, so there Sanatan Goswami, he says and quotes one verse from Yoga Vasishtha Ramayana, which I am going to speak and glorify Maharaj. So I request everyone to repeat this verse after me. This is from Sanatan Goswami's commentary to Brihad Bhagavatamrita, Canto 3, and last chapter, 7th chapter, text 14. Sada santo bhigantavya yadyapi upadasantina yahi swaire kathastesham upadesha bhavanti te. So when I first read the translation of this verse, I could see that yes, that's so much true and fitting for His Holiness Radhanath Swami Maharaj. I'll read the translation. In all circumstances, one should approach saintly persons. In all circumstances, one should approach saintly person. Even if one receives no teachings, spontaneous dialogues with them imparts valuable lessons. We can see that how just by some interaction, as Acharya Prabhu was telling, and we have seen also in Calcutta, it's not that Maharaj really wanted to give some instruction, but just his interactions is like walking, talking Srimad Bhagavatam. That's what Sanatan Goswami is telling. That even if you don't receive any proper instruction or teachings from a saintly person is one, by his spontaneous dialogues, he will impart valuable lessons. And then the next verse is more important. Sunyam apurnatameti मृत्युरपि अमृतायते आपत् संपद इवा भाति विद्वज्जन समागमा. When one approaches persons who have this real knowledge and saintliness, emptiness overflows with fullness. Something which is really empty becomes full. Death becomes immortal nectar, and disasters can seem like good fortune.
So when I read this verse, I was just thinking how His Holiness Radhanath Maharaj, he made emptiness to fullness. Some things which can be so empty in our scriptures, bhakti scriptures, uh, and also Srila Prabhupada in his classes, in his instructions, he has condemned social service so much. Hospitals, schools. But you go to Bhakti Vedanta hospital, you feel like no, leaving your sleepers on the front of it. And it's not a hospital. So many devotees come just from a hospital. So it's empty in terms of what scriptures say that these are all mundane things. But His Holiness Radhanath Swami Maharaj is so expert because of his instructions, because of his association. He has the power to make emptiness to complete Krishna conscious fullness. And also, yesterday I was just hearing one class that His Grace Radheshyam Prabhu gave in Chowpatty recently. He had gone for prerana, and next day he gave Sunday feast. So Radheshyam Prabhu was glorifying Radhanath Maharaj, and he was telling, I want to see that Tula Bhar. Maybe someone can take a picture. Someone is going to Chowpatty. You are all going. So Radheshyam Prabhu was telling that there is one Tula Bhar now, and the Tula Bhar is like a biman, because generally Tula Bhars, you have a fear that you will fall off and everything. So Radheshyam Prabhu was glorifying Maharaj ki how His Holiness Radhanath Swami Maharaj has that love and feeling and concern for the Vaishnavas, and that is so much permeated in this ISKCON Chowpatty. And I can see this Tulabharam. It looks like almost a biman, and it's so comfortable that people will not fear. Sometimes in Pune, I have seen Radheshyam, people have a lot of fear that they may fall off from this Tulabhar, but one will be feeling very comfortable. And then Radheshyam Prabhu was telling that this kartal, generally when I go to temples, I see this kartals, what do you say, the thread that is attached to kartal. It's it pains the fingers. But Radheshyam Prabhu was showing this and showing that how the kartal thread has so much of kusan, so that it really gives lot of comfort to the fingers. So in this way, the association of a saintly person makes these things a comfort to the body is a very empty thing as compared in the scriptures. If you read the scriptures, this is mundane. But when it comes in association with a saintly person, he has the realization to transform a completely empty thing which is condemned in the scriptures to make it such Krishna consciousness, full in Krishna consciousness. So, as it is told in this verse, Maharaj is expert in making sunyam to apurnatameti, to make the empty things which is actually condemned in the scriptures, to not just make it full in Krishna consciousness, but to give that Krishna consciousness experience. It's not that Bhakti Vedanta is hospital itself, the doctors who are devotees, they are getting engaged. But so many people who come to that hospital, they become full in Krishna consciousness, though the origin, if you see on a scriptural level, it is just a hospital. And the second one is, and as this verse says, apad sampad iva bhati. I'm hearing now the lectures of 2001. In 2001 series, on the end part of it, Maharaj is traveling in many places in Europe, and Maharaj is giving series of lectures about the counselor system and everything. And in that lecture I was hearing recently, Maharaj is telling again and again the same point. Maharaj is telling that it is not possible, or it may or may not be possible for a devotee to perfect his life in this life itself or immediately. But we as leaders and caretakers, it is our responsibility to really take care of the devotee the entire life and after life. That is the mode of the counselor system. Because
life means ups and downs, and we need a person who can really convert and help the person to see the down as a up. And Maharaj was describing the importance of having a Siksha Guru or counselor and everything. So, His Holiness Radhanath Swami Maharaj is pioneer in creating this feeling of taking care of devotees through counselor system, through various ventures and all those things, which is like a apat, but a saint is one who has the ability and the spiritual realization to convert the apath to sampath. People come with some apath, but when they get the love, the care of the devotees, they actually become devotees, they get transformed. So many people have come to devotees with some distress, but when they meet devotees, they get completely enlivened. And also another factor that Maharaj was speaking in the class, that we must really ensure that we don't leave any person till the last breath of his life. And we can see Maharaj's personal life example, that whomever he was giving time in 1983s, 80s, when he started preaching in India, now also he's really giving them time and energy and really giving them association. Now it is 2023 and 1983, His Grace Biswarup Prabhu and all that first batch of doctors came into Krishna consciousness. Now it's 23. I don't know how many years, 83, 93. Huh? 30, 36, 40 years. 40 years. So 40 years Maharaj is still giving with commitment the same time. With all, Maharaj writes in this Journey Within, the book, the story of Biswarup Prabhu's daughter and all those stories, and how Maharaj is so expert in ensuring that every situation we are there standing in front of the devotees as their caretakers. So, apad, just repeat, apad sampadiva bhati. Then a person thinks, this misfortune has come in my life, but it has brought Krishna consciousness. I can remember when in 2009 all devotees shifted. Actually, I had come before, and all devotees came. We were in so much of confusion how to raise money and how to really take care, and we were never given that. And I remember Maharaj had come first time here, and in this kutir, Maharaj is giving class, and a small gathering was there. Photograph is there, small gathering was there, and Maharaj was just telling that I'm so happy that devotees have shifted here, and energy, that devotees have come here, and devotees are chanting here, and devotees are praying here, that energy will bring Krishna, and Krishna will manifest everything. And that was so much encouraging, because we were so confused how to handle, and we were so I was thinking, yeah, I'll just have to chant Hare Krishna, everything else will manifest. But Maharaj has this unique ability. And similarly in 2019 January also, we had gone to there in GV. Maharaj took us to a small GV tour, and Maharaj was explaining everything. So Maharaj has this unique ability to create sampath in all different apat situations. And Maharaj is also expert in training his disciples to give that feeling of care and comfort through devotee care system and the counselor system and everything, how to create the sampath, the fortune from their misfortunes. And the last one, mrityapi amritayate. The saint, or the nature of the saint, is he makes death become immortal. So, and we can see that real death is actually lack of Krishna consciousness. And Maharaj, through his lectures, as Maharaj Prabhu was telling, that it's like saving the ego, Maharaj, through his lectures, actually has the power to
infuse so much of encouragement, so much of life to our Krishna consciousness. Sometimes if I just miss 1 or 2 days not hearing Maharaj lectures, I feel like, oh, what I am doing. I should hear some lectures, during Prasadam, during some things. Yesterday I was looking at Chaupati, Radha Gopinath Media's YouTube channel, and then I was searching Maharaj has given some class, and then I found out Radheshyam Prabhu's class. I was playing that and hearing. But Maharaj, through his classes, Maharaj prepares so much. One Mataji brought some khichdi, and because Maharaj had some health issues, Maharaj didn't took that khichdi. And this Mataji was really crying, Maharaj, I made with so much of love, so much of care, so much of attention. And this khichdi or some prasadam she had made, that you didn't take it. Maharaj said, I have invested my entire energy, my entire realizations, whatever my practice in my classes. And how painful it is when I see that my devotees are not hearing those lectures seriously and trying to apply them in their life. So we can understand that Maharaj as a saint, as is explained here, Mrityam api amritayate. Through his classes, Maharaj has created a sense of encouragement to Krishna consciousness, a giving of life to Krishna consciousness. If we really want to be enlivened in Krishna consciousness, we can rest assured that continue hearing the classes of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, and you will be always jumping in Krishna consciousness. So this is, when I read this verse, I was relating with His Holiness Radhanath Swami Maharaj, how he has created fullness from apparent emptiness of this material society, connected it to Krishna consciousness and created fullness. How in every situation he has trained, and he himself has shown as an example to create sampath from the apath through devotee care system, through counselor systems, and how through his lectures, through his Bani, he has been giving life to the death, and giving life and encouragement to devotees and to disciples in Krishna consciousness. So I pray to His Holiness Radhanath Swami Maharaj that I can become servant of all Vaishnavas, and really aspire and live the life of a true saint, as Maharaj is exemplifying and is personifying. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, His Holiness Radhanath Swami Maharaj Vyasa Puja ki jai. Shri Nitaya Prabhu ki jai. Thank you. So I request Shri Govind Gospel to come. Thank you, Shri Nitaya Prabhu, for sharing with us that how our life has become successful because of coming in touch with Maharaj, and so many wonderful qualities of Maharaj. Thank you. So after Shri Govind Gospel gives offering, we request His Grace Prem Sarup Prabhu to be ready, and after that we request His Grace Purushottam Nitaya Prabhu to be ready. हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी निति नामे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्ण। तो मेरे जीवन में पहली बार महाराज से मिलना, मतलब 2009 में मैं थोड़ा सिंसियरली भक्ति करना शुरू किया। पहले थोड़ा कनेक्टेड था, लेकिन 9 से 16 राउंड्स रेगुलरली जब करना, तो उस समय सब भक्त लोग बता रहे कि अक्टूबर के 31st, आई थिंक 31st अक्टूबर दैट ईयर वाज प्रेरणा फेस्टिवल, राइट, 31st अक्टूबर। एक महाराज आ रहे हैं जिनका नाम है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। मैं कभी देखा ही नहीं हूँ, मैं जानता ही नहीं था कि महाराज कैसे दिखते हैं। तो मुकुल आपू हम लोग का यूथ प्रीचिंग और सब देखते थे, तो हम लोग को
कॉलेज कॉलेज से लड़के उठा के लेके आने ऐसे महाराज उठा लो यूथ प्रीचिंग जो जो जिस कॉलेज में है, सबको उठा के लेके आना सबको बच्चे लोगों को। तो अभी मैं तो बस मार्च महीने से 1 मार्च से मैं थोड़ा बहुत फिर से ट्रैक पे आया था, पहले भटक गया था फिर आया था 1 मार्च से। तो आना शुरू तो हमारे मंदिर में क्लासेस होते थे, तो मुझे पता ही नहीं कि कौन है महाराज, और उनका कोई बुक लॉन्च है 31 मार्च को, द जर्नी होम लॉन्च होने वाला था कलकत्ता में। तो अभी कॉलेज में हमारे हमारे कॉलेज में ऐसा सिचुएशन था कि पॉलिटिक्स होता था, पार्टी। तो एसएफआई, छात्र परिषद, कांग्रेस, एसएफआई वाज सीपीएम एंड वन नक्सल पार्टी वाज देयर, डीएसए। तो अभी चेंज हो गया बहुत कुछ, बट पार्टी अभी भी है कॉलेज में। तो उसमें अभी मैं थोड़ा दूसरा पार्टी में आ गया था, मैं इस पहले एसएफआई में था, लेकिन मैं जब भक्ति में आ गया तो दोस्त लोग को भी उठा के लेके आना, चलो मंदिर चले। और उसमें भी मैं देखता था कि जो आ सकते हैं प्रोस्पेक्टिव लोग हैं उनको ही उठा, मतलब मंदिर लेके चल, मंदिर चलते। तो उस समय अभी सेवा मिला है कि बच्चों को यूथ प्रीचिंग चलो लेके आना है मंदिर, महाराज के लिए चले। और मैं भी नहीं जानता कौन है, तो वहाँ का और एक दो और थे, सब अजीब अजीब अजीबो गरीब दोस्त थे। तो मैं उसमें से एक दोस्त था जिसका नाम राजेश, वो थोड़ा पगला टाइप का था, पागल टाइप का था थोड़ा। तो वो बहुत सारे लड़कों को उसने बहुत लोगों का सुकृति क्रिएट किया है। तो मैं तो चूज करता था कि इसको लेके जाऊंगा, इसको लेके किसको किसको बोलूंगा, पास किसको किसको दूंगा, मैं सोचता था। लेकिन वो बोला चल इस्कॉन कोरबी, जैसे एसएफआई कोरबी इस्कॉन कोरबी पार्टी कोरबी चल। तो वो सबको जाके कहाँ, बोले यार किसको किसको बोल रहा है, तू मत बोलो इसको। तो मेरे को पता है ये लोग खूंखार लोग हैं, इनको मत बोलना, ठीक है। तो बहुत लोगों को पूरा हॉस्टल में ढिंडोरा पीट दिया कि अभी बड़ा एक फेस्टिवल है, प्रेरणा फेस्टिवल, चल चल चल। तो सबको उठा के लेके आ रहे। तो तो मेरे से ज़्यादा प्रोपोगेशन उसने किया, बहुत सेवा किया उसने। मतलब 2-3 साल तक वो कनेक्ट, थोड़ा बहुत कनेक्टेड था। वो खुद ज़्यादा भक्ति में कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन लोगों को कनेक्ट किया उसने, बहुत लोगों को। तो फिर उसी फेस्टिवल में मेरा एक दोस्त था तुहिन, तुष्ट मोहन, बाद में डॉक्टर बन गया, तो वो उसको उठा के लेके आया। तो एनीवेज हम लोग पहली बार बहुत सारे लोग गए महाराज के फेस्टिवल में। फर्स्ट ईयर के भी बच्चे थे, कुछ ये थे, उसको तो मेरे को भी पता नहीं था। उसने मेरा प्रोपोगेशन का काम इजी कर दिया। मुकुल अप्पू का सेवा हम सोच रहे मैं वो लेके आ रहा हूँ, मैं नहीं लेके आया, वो लेके आया था। तो महाराज के सामने पहली बार सुनने का मौका मिला 2009 में, बस फर्स्ट इंटरेक्शन, एंड आई रियली लाइक इट टच्ड माय हार्ट हियरिंग हिज बायोग्राफी, उनके जीवन के बारे में सुनना। तो 2-3 घंटे में जितना महाराज बता सकते थे अपने जीवन के बारे में, तो उन्होंने बताया। फिर उनका ऑटोग्राफ वाला एक बुक लिया हम लोगों ने। हमारे कॉलेज में प्रीचिंग चालू हो चुकी थी, तो 4-5 सीनियर लोग थे, तो हम लोगों ने सब लोगों ने पैसा मिला के 200 रुपये या 250, 200 रुपये साथ था, 180 या 200 रुपये था। सब लोगों ने 40-40, 20-20, मतलब यूथ फोरम के पास कहाँ पैसा रहता है तो सब लोगों ने मिला मिला के बुक खरीदा, और महाराज ने साइन भी किया था उसमें। तो साइन करके वो लेके गया। मैं अभी सबसे पहले मैं ही शायद उठा के लेके गया, मेरे को पढ़ना है। तो मैं घर गया तो 6 दिन में उसको कंप्लीट किया। मैं सब फास्टेस्ट बुक रीडिंग में जो किया हूँ, तो मेरे हिसाब से सबसे फास्टेस्ट 6 दिन में महाराज का। और उसमें तो बहुत सारी कहानियाँ थी, सो मेनी स्टोरीज, एंड दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। और फिर बाद में अभी नंबर आया कि दूसरे दोस्तों को भी देना होगा बुक, सबने पैसा लगाया तो सबको थोड़ा थोड़ा करके सबने पढ़ा। कुछ लोग पढ़े, फिर नहीं भी पढ़े, फिर लास्ट में बुक अपने पास झाड़ के रख लिया अपने पास कि महाराज का उसमें ऑटोग्राफ है। तो somehow I kept that is still with me, Maharaj's autographed first book that I had. तो उस तरह से जर्नी शुरू हुई। फिर लेटर ऑन आई कुड अंडरस्टैंड दैट महाराज लेक्चर्स वर वेरी मच टचिंग मी, क्योंकि मेरे जो काउंसलर थे वो पूछ रहे थे दीक्षा किन से लेना है, दीक्षा किन से लेना है। तो मालूम मेरे को पता नहीं, मेरे प्रभुपाद का लेक्चर सुन के मैं खुश हूँ, मेरे को और नहीं चाहिए अरे भाई दीक्षा तो लेना है, नो यू शुड डिसाइड समथिंग। तो मैं फिर टटोला अपने आप को, मैं सोचा यस यस आई लाइक परम पूज्य राधानाथ महाराज, दैट इंस्पायर्स मी लॉट, आई शुड हियर हिज लेक्चर्स। तो इस प्रकार से फिर धीरे 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 एस्पायर करने लगा, महाराज के लेक्चर्स और सिंसियरली सुनने लगा। तो 2009, 10, 11 फिर आई थॉट टू ऑफ ज्वाइनिंग ब्रह्मचारी आश्रम। तो इस प्रकार से तो पहले पहले क्या था कि थोड़ा अभी नए नए जब हम लोग भक्ति में रहते हैं तो महाराज का थोड़ा ग्लैंस मिल जाए, महाराज जब आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा महाराज देख लें, तो उसी में हम लोग उसी के पीछे ही हम लोग आते, क्योंकि आसपास महाराज से बात तो उतना कर नहीं सकते। तो महाराज का अगर ग्लैंस मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस समय मेरा एक कैमरा हुआ करता था, बहुत बड़ा एक कैमरा, मेरे भैया ने कैमरा खरीदा था, तो मैं उसको अपने पास ही रखता था, बहुत बड़ा कैमरा था। तो एक बार मंदिर में
आई थिंक दिस इज 2011, मतलब उस समय सबसे बड़ा प्रेरणा फेस्टिवल हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था साइंस सिटी ऑडिटोरियम, 2011 आई थिंक, जनवरी और फरवरी 7th आई थिंक 6 और 7 फरवरी, उस समय महाराज आए हुए थे। तो नया ऑल्टर बनाया था, इतना पूरा सब कुछ तोड़ ताड़ के नीचे नीचे ग्रेनाइट फ्लोर, सुंदर ऑल्टर, और पूरा बहुत बड़ा अरेंजमेंट हो रहा था, इतना बड़ा, मतलब 7 दिन, मतलब 6-7 दिन फेस्टिवल आई थिंक चला था कुछ तो। और साइंस सिटी ऑडिटोरियम, कंपैशन, वही प्रेरणा था, पैशन टू कंपैशन, जेडी बड़ा साइंस सिटी में भी एक हुआ था। तो वो तो उसमें भी हम लोग कॉलेज से सबको, बच्चे लोग उठा के लेके आना है, सेवा करना है, तो उसमें 3 कॉलेज से उठा उठा के लेके आया था, 3 मेडिकल कॉलेज थे। तो समहाउ उस समय शायद पुष्प अभिषेक भी ऑर्गेनाइज हुआ था टेम्पल में। महाराज उसमें थे, राधा गोविंद जी का पुष्प अभिषेक था। तो अभी मेरे पास कैमरा है, तो मैं थोड़ा दूर में साइड में खड़ा हूँ, महाराज के सामने तो जा नहीं सकता, तो मैं सोचा था महाराज थोड़ा इधर देखिए ना इधर थोड़ा देख लीजिए। तो महाराज का somehow आई थिंक, मतलब आई हैव फेल्ट कि महाराज कैन अंडरस्टैंड व्हेनेवर परमात्मा इंस्पायर्स, परमात्मा कनेक्शन जो है महाराज का, तो भक्तों के साथ बहुत ज़्यादा ये है, क्योंकि डायरेक्टली तो इंटरेक्शन हो नहीं सकता, लेकिन महाराज कैन हियर लाइक। तो मैंने देखा, जैसे मैं रेडी था, महाराज इधर देखें, महाराज प्लीज थोड़ा इधर देखिए, थोड़ा क्लिक कर लूंगा, तो महाराज ऑल्टर के साइड उसमें और दरवाजा मैं इस साइड में हूँ, राइट साइड में, तो महाराज ऐसे करते 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 ऐसे देख मैं फट से खींच लिया तो मेरे को लगा तो इत्तेफाक भी हो सकता है, बाई चांस भी शायद महाराज ने ऐसे देखा, महाराज फिर एक बार फिर से देखे, तो मैं तो एक बार मैं और डिजायर किया, महाराज थोड़ा अगर देखें तो बचपना है, स्टार्टिंग में हम लोग बचपना रहता है कि महाराज प्लीज अगर, तो फिर से महाराज फिर से उस साइड में देखे, दरवाजे की तरफ, कैमरा की तरफ मेरी तरफ ही थे, तो फिर से मैं क्लिक कर दिया, तो मैं सोचा नहीं, महाराज कैन रियली, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग का यही सब छोटा मोटा टिटबिट्स ही रहता है कि महाराज शायद हाँ, तो इस तरह से बचपना हो या जो भी हो, तो दिस ऑल दिस इंटरेक्शंस, लिटिल बिट इंटरेक्शंस आई हैड आफ्टर 2012, लाइक आई लेफ्ट माय जॉब 2013। तो ऐसा सिचुएशन खराब हो गई थी, मेरे को वृंदावन जाके ट्रीटमेंट करने के लिए जाना था, एंड आई हैड थॉट कि ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करूंगा। तो 13 में वृंदावन में था, और उस समय 13 में महाराज की कार्तिक यात्रा भी वृंदावन में हुई। तो वहाँ पे मेरा हर साल जब तक मैं जॉब कर रहा था, तब मेरी एक सेवा थी कि मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत जाके फ्री में थोड़ा, मतलब भक्तिवेदांत आश्रम में, भक्तिवेदांत जो हॉस्पिटल का एक ये होता था, क्लिनिक छोटा, ये जो क्या बोलते हैं, हाँ कैंप नहीं, वो नहीं, हमारी यात्रा में एक कॉर्नर लगाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा मैं सेवा, किसी का अगर 2011 में भी वैसे किया था, किसी का पैर में अगर कांटा चुभ गया, कुछ कर चुक गया, तो वॉलंटरीली जाके, क्योंकि मैं उस प्रोफेशन से, तो थोड़ा ड्रेसिंग वेसिंग कर देना, टैबलेट दे देना कुछ, तो 2011 तक किया। 12 में मायापुर में यात्रा हुई थी, 13 में वृंदावन यात्रा हुई, लेकिन मैं अभी सब छोड़ दिया हूँ। मैं खुद ट्रीटमेंट ले रहा था, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, लेकिन अभी मेंटली मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि मैंने सब छोड़ दिया अभी, ठीक है, मैं तो अभी कुछ हो नहीं। तो मैं जाके देखा, तो ऑलरेडी इतने सारे डॉक्टर लोग हैं, वो सेवा दे रहे हैं। तो उस दिन मेरे को बहुत अंदर से ग्लानी नहीं, बहुत खराब फील हो रहा था कि व्हाट आई फील इज कि महाराज जब भी यात्रा होता है तो किचन में जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, जो जहाँ जहाँ सेवा होता है, बीच में ही, यात्रा के बीच में सब जगह जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं महाराज। कोई रोटी बेल रहा है, जितनी भी माता जी है, सबके सामने महाराज जाएंगे और सबको एटलीस्ट ग्लांस देंगे। महाराज का एक ये रहता है कि सबको एटलीस्ट देख पाए, ऐसे ऐसे करके सबको देखेंगे महाराज, ये महाराज करिए। इवन हॉस्पिटल वाला जो कॉर्नर है, वहाँ पे भी जाते हैं महाराज भक्ति। तो मेरे को लगा मैं सब कुछ छोड़ के आ रहा हूँ मंदिर, और महाराज तो आई हैव नो, एटलीस्ट मैं अगर उधर रहता तो डॉक्टर बन के भी मैं कुछ सेवा करता, तो महाराज थोड़ा देखेंगे, तो एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करेंगे। मैं ऐसी जगह मैं सोच लिया हूँ कि मैं इधर आऊँगा, महाराज मेरे को जानते भी है कि पहचानते भी है कि मेरे जीवन में कुछ मैं हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ, आई डोंट नो, आई रियली फेल्ट वेरी बैड एंड आई वाज ऑलमोस्ट लाइक इन अ मूड ऑफ क्राइम। तो उस समय वृंदावन में 9 महीना था, तो साइकिल लिया था, मैं साइकिल खरीदा था ट्रीटमेंट के लिए। तो साइकिल लेके एक जगह पार्किंग किया था फोगला के अंदर, तो फोगला से साइकिल लेके बस निकालने ही जा रहा था, प्रोग्राम खत्म हो गया था, शाम को प्रसाद वसाद सब खत्म, आरती दामोदर अष्टकम खत्म, तो साइकिल ले आके जस्ट साइड से निकाल रहा था, और ऐसे ही मूड में ही था मैं। तो साइड में देखा, फोगला के साइड में अंधेरे में महाराज किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोई एक डिवोटी हैं, उनके साथ महाराज दोनों बैठ के एकदम थोड़ा रेलिंग के ऊपर बैठ के, कुछ थोड़ा ऊंचा जगह था, वहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही देखा महाराज साइकिल तो था, तो इमीडिएटली दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम किया, तो मैं थोड़ा बहुत ही दुखी मूड में था, महाराज आई डोंट नो व्हाट इज माय, मतलब मैं कुछ कर पाऊंगा जीवन में, पता नहीं, आई एम अननोन पर्सन, आई हैव नो
standing in this world, you know me or not, and I would I would get some appreciation from you somewhere, I don't. ऐसे ही दंडवत प्रणाम किया और ऐसे ही मैं उठ गया, उठ के मैं जस्ट साइकिल लेके निकलने वाला था, तो महाराज को एक बार देखा मैं, तो उस समय मेरे को फील हुआ महाराज द वे ही लुक्ड टू मी, तो ही कुड अंडरस्टैंड द पेन आई एम हैविंग, द वे हिज ग्लैंस वर देयर दैट टाइम, आई कुड रिलेट दैट ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट थॉट प्रोसेस आई वाज गोइंग थ्रू. वो जो आंखें जब मिली महाराज तो मैं ऐसे देखा, तो देन आई कुड गेट सेटिस्फैक्शन कि एटलीस्ट he understands like each and everyone's emotions. If required, Paramatma conveys that same information to him whenever required. And I have like हम लोग इतना दिनों से महाराज जो सुना है, महाराज has always reliance on the connection with Paramatma. हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि महाराज जानते भी कि नहीं, पहचानते भी कि नहीं, क्या कर रहे हैं सेवा. तो महाराज का मूड हमेशा ये रहा है कि if you are serving your spiritual master Krishna, then whatever thing which is required for me to be known, Krishna Paramatma within your heart, Paramatma within my heart will convey it to me. And that day I felt really कि he understands my. तो उसके बाद से मेरे को थोड़ा संतोष मिला. That's no problem. I can at least continue my service. Even though I am going in Brahmachari ashram, I may not be able to serve in Bhaktivedanta hospital, but that's okay. That's not a big thing. तो उसके बाद फिर ऐसे ही छोटे मोटे इंटरेक्शन ही हुए. फिर 2014 में 13 में वहीं पे था, 14 में ज्वाइन किया. तो 14 में हमारी ये यात्रा थी, उडुपी और हम्पी यात्रा थी. तो अभी मम्मी पापा को 14 में ज्वाइन कर चुका था. मम्मी पापा को बताना है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन कर लिया हूँ तो नहीं बताना, करने वाला हूँ बताना है. मैं कर चुका था लेकिन बताना होता है कि मैं करने वाला हूँ, ठीक है. क्योंकि वो जितना डिले हो सके वो हम लोग तो लंबा खींचते हैं, ठीक है. तो मेरे को बोला गया कि घर पे बताना है कि आप अभी एक साल ट्रेनिंग लेने वाले हैं. हम एक साल ट्रेनिंग एज यूजुअल फॉर्मूला, एक साल ट्रेनिंग लेंगे, मंदिर में आके कोर्सेज पढ़ेंगे. तो मैं मम्मी को इसीलिए मैं सोचा कैसे बोलूँगा. तो 2014 में मैं एक बार इधर आया था, तो यहाँ पे तब कुटिया उटिया था. तो उस समय मैं सोचा कि वाई नॉट आई शुड बुक माई पेरेंट्स टिकट इन फ्लाइट से बुक करता हूँ, और फ्लाइट से जब आएंगे तब मैं फ्लाइट में बताऊंगा. तो वो तो अलग कहानी हुई, चलो ठीक है. तो फ्लाइट का टिकट बुक किया था 2014 में कि पेरेंट्स को रिटर्न में फ्लाइट में लेके आऊँगा. तो यात्रा के बाद दिन ही मैंगलोर एयरपोर्ट उडुपी के पास में, तो पेरेंट्स भी हैं, मैं भी हूँ. तो वहाँ पे एयरपोर्ट में बैठा हूँ. अब मुझे पता नहीं कि महाराज भी उधर ही आने में, बहुत सारे डिवोटी लोग दिख रहे हैं उधर. और एकदम आधा घंटा बचा है, मतलब 11 बजे फ्लाइट है, तो 10:30 बजे 10 साढ़े 10 में हम लोग लॉन्च में वेट कर रहे हैं. और वहाँ पे मैंने अभी वहाँ पे बहुत सारे पेपर पड़े हुए थे, न्यूज़पेपर. तो पुराना कीड़ा था मेरा, तो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कुछ भी हो तो न्यूज़पेपर दिखता था. हॉस्टल में बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता था, 40 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ने में निकलता था मैं. दिन की 40 मिनट मेरे एवरीडे न्यूज़पेपर. तो वहाँ पे देखा, तो मैं से कोई तो देख नहीं रहा है, वहाँ पे पैंट शर्ट में हूँ. और भक्त लोग इधर उधर कहीं थे, और मेरे मम्मी पापा इधर. तो मैं न्यूज़पेपर निकाला, थोड़ा देख लेता हूँ व्हाट इज न्यूज़ गोइंग, थोड़ा पलट लेता हूँ. पलट रहा हूँ टेबल में था, और उधर गौरंग को सब आसपास थे इधर. तो उस समय महाराज घुसे उधर, और मैं देख रहा हूँ सब डिवोटी लोग दूर दंडवत मार रहे हैं. मैंने कहा है, और उस समय समहाउ ऐसा हो गया कि महाराज ने मेरे को देख लिया. तो मैं ऐसा मतलब मेरा परेशानी वाला सिचुएशन हो कि मैं नहीं, और महाराज समझ में आ गया डिवोटी है. कंटिन्यू समहाउ ही अंडरस्टैंड. आई थिंक धोती कुर्ता में था क्या पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, पैंट शर्ट में था, आई डोंट नो. तो महाराज ऐसे देख के समझ गए, एंड महाराज लाफ्ट स्माइल एंड मैं बड़ा एम्बैरेसिंग से फिर दंडवत मारा. मैं फंसना था तो इधर ही फंसना. मैं महाराज के सामने ही न्यूज़पेपर लेके बैठा. मतलब इतने दिनों से न्यूज़पेपर देखा ही नहीं, उधर मैं न्यूज़पेपर देख लिया, तो इतना परेशान. फिर महाराज आ गए, फिर महाराज भी शायद वेट कर रहे थे. तो मेरे मम्मी पापा गए, तो मम्मी पापा लोग शायद 2012 उसके पहले वाला यात्रा में भी गए थे. तो महाराज के सामने जाके, और वो लोग तो मम्मी पापा बोल्डली चले जाते हैं महाराज लोग के सामने. हम लोग का तो हालत खराब रहता है. तो वी आर फ्रॉम रामकेली, मालदा पे, मालदा. मतलब ठीक है. अच्छा सा. हाँ, तो महाराज का ऐसे कि यस पेरेंट्स हैं, ठीक है चले. तो महाराज मम्मी पापा, तो वो कॉन्फिडेंस मम्मी पापा को बहुत है कि महाराज हम लोग से बात किए. तो ज्वाइनिंग के बाद भी मेल वेल करते रहते, कुछ चिट्ठी विट्ठी लेकर देते महाराज को, ठीक है कि ये हमारा बेटे को बाहर लेके हुआ. एनीवेज, तो वो छोटा सा इंटरेक्शन मम्मी पापा का हुआ. फिर फ्लाइट में उड़ते वक्त मैं मम्मी पापा को बोला, मम्मी को समझा रहा हूँ, तो मम्मी मैं 1 साल के लिए मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ.
जॉब छोड़ने का क्या, अगर कोचिंग अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़ अच्छे से, तू जॉब करते रहे, ठीक है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इनको कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझाया, समझ में नहीं आया। मतलब धुर, मैं ब्रह्मचारी बन रहा हूँ। तो उनका उड़ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। बुम। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूँ, पता नहीं बीटेक वाले कैसे समझाते हैं घर पे आके। ठीक है, एक साल टाइम पास करा देते। मतलब मैं यार इंस्टेंटली दिया डूम, तो उस समय बोले, बाद में बोलती है अच्छा होता अगर प्लेन क्रैश हो जाता तो अच्छा। मैं समझ उसको संभाल लेती थी, तू तू जो बोला मुझे। तो इस तरह से बहुत सारे वो सब लीला वीला हुई बहुत। ज्वाइन करने के बाद फिर मंदिर आया, तो इस तरह से महाराज मतलब ऐसे मैंने जो भी देखा है कि वेन एवर समटाइम्स वी फील दैट अगर महाराज से थोड़ा इंटरेक्शन हो पाता, बहुत सारे भक्त लोग सोचते हैं कि जो भी नए नए दीक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, तो महाराज क्या हमें टाइम नहीं देंगे, महाराज से कभी मिलना नहीं होगा, कभी मिला नहीं सकते हम लोगों को। तो महाराज का जो प्रिंसिपल है, तो मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था व्रज विहारी प्रभु का, तो वहाँ पे शायद एक और सन्यासी थे उनके साथ। तो महाराज उनसे पूछते हैं हाउ मच टाइम यू हैड विद यू मेट विद शिल प्रभुपाद। आई थिंक हाँ, निरंजन स्वामी महाराज। तो हाउ मच टाइम यू हैड लाइक मेट विद परम पूज्य हिज डिवाइन गेस्ट शिल प्रभुपाद। तो ही सेड दिस एंड ही वाज टेलिंग जो भी अभी इस्कॉन मूवमेंट में जो भी सेवा कर रहे हैं, एक्चुअली अगर देखेंगे तो उन्होंने उनका प्रभुपाद के साथ कितना समय उन्होंने मिला है, मिला ही नहीं है, वर्चुअली नथिंग दे हैव गॉट। So, but they are doing the greatest service now. So it doesn't matter that we are getting active Vapu association of our spiritual master or not. But ultimately, if we are dedicated to the to Guru's instructions, then that is the best thing we can do. तो महाराज का संपर्क अपने गुरु महाराज से भी वही रहा है, और वो भी एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से कि हम लोग भी उसी प्लेटफॉर्म पे रहें। तो दैट्स व्हाई ही डजंट लाइक डिवोटीज अराउंड। कहीं पे भी आसपास रहेंगे तो हम लोग भी डरे डरे रहते हैं महाराज के पास जाएं कि नहीं जाएं, और सर्वेंट को ताकते रहते हैं। सर्वेंट अलाउ करेगा, हरी झंडी देगा तो पहुंच जाएंगे, नहीं तो दूर ही रहेंगे। तो इस प्रकार से तो whenever and each and every word when he speaks from his heart, even at the time of his दीक्षा। तुम्हारा तो दीक्षा के सामने भी देखते ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर गुरु परंपरा, आई रियली एंड ऑन बिहाफ ऑफ शिला प्रभुपाद, आई थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल टू यू। उन्होंने ग्रेटफुल होने की क्या जरूरत है। तो महाराज को देखो, पहले महाराज तो पहली बार एटलीस्ट आई टू आई मतलब महाराज के सामने महाराज दीक्षा दे रहे हैं, तो आई एम ग्रेटफुल टू यू। ग्रेटफुल क्या, वी शुड बी ग्रेटफुल टू, आई गिव यू द नेम ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर गुरु परंपरा दिस सच एंड सच नेम। तो ये है कि महाराज जो बोलते हैं, इंटेग्रिटी जो फॉलो करना, जो बोलते हैं, ही वॉक्स द टॉक वेन एवर एंड ही एक्सपेक्ट्स अस ऑल्सो कि जो भी बोला, कभी बार हम लोग बोल देते हैं हाँ ठीक है कर देंगे, हम आपके पास हम यहाँ आ रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते नहीं। बट ही मीन्स एवरी सेंटेंस वट वी स्पीक, एंड ही एक्सपेक्ट्स ऑल्सो दैट वी शुड ट्राई टू फॉलो इन दिस सेम स्टेप। एक ग्लोरिफिकेशन में बहुत पहले मैंने सुना था कि एक डिवोटी थे, बहुत ज़्यादा उनके जीवन में समस्याएं चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशानियां चल रही थी। तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए और वो बोला कि तो मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों चल रही। तो वो बोलते हैं कि आपके चार्ट के हिसाब से आपको मर जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव सर्वाइव्ड ओनली। तो जो चल रही है, मतलब कि आपने जो एक्सेप्ट किया है, आपके जीवन में जो गुरु है, ही इज सच अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुरु दैट इवन एक्सेप्टिंग हिम, जो आपकी दीक्षा नहीं हुई है लेकिन अगर एक्सेप्ट भी किया है हमने उनको, उनकी वजह से आपके सारे कर्मों के फल कट जा रहे हैं। बस टिके रहो, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, he will definitely you will definitely go through it. So the way the the inspiration which he has given all of us and the mood with which we should serve Srila Prabhupada, जिस प्रकार से हमें प्रभुपाद जी की सेवा करना है। हर लेक्चर में, कोई भी आज तक मैंने ऐसा लेक्चर नहीं देखा सुना जब महाराज ने अपने गुरु को श्री प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई नहीं किया हो। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि मतलब आई एम नॉट ऑन दैट ग्रेटिट्यूड लेवल। हाँ मिला, भक्ति मिली तो मिली हमको, वी आर डिवोटीज, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोशन सर्विस, बट द वे ही ऑलवेज ग्लोरीफाइज श्री प्रभुपाद इन हिज एवरी लेक्चर एंड ही मीन्स एवरी वर्ड स्पोकन। तो दैट इज समथिंग लाइक वो उस आयाम तक पहुंचना ही डिफिकल्ट है। सो this with whatever things I could recollect in my life, and
that I try to speak, and I'm not a good example. Everyone, like, I felt that we all, every sadhaka has to go through his struggles and his. But if we are deeply connected, deeply rooted with Guru, and then definitely Paramatma and Guru really help us. And actually speaking, these two are the only, like, external manifestation and internal manifestation. Both are always guiding a living entity. कोई भी अगर एरा गैरा नत्थु फेरा भी हो, अगर भक्ति में आता है उसको भी समझ में आता है कि भगवान किसी को कैसे गाइड कर रहे हैं, कोई कोई सिचुएशन में कैसे भगवान निकाल रहे हैं. तो द सेम सुप्रीम लॉर्ड कम्स एक्सटर्नली एज अ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन. एंड so I'm not a good example. I pray to Guru Maharaj that please make me at least something worthwhile. I'm not I'm struggling in my own life, and so many anarthas to deal with. But if I get some drop of mercy, then maybe in this lifetime of some lifetime I will be able to serve Shri Radha Krishna, Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada in some way or the other. So with this prayer, I would like to end something which I try to glorify my eternal spiritual master. Hare Krishna. Param Pujya Shri Srimad Radhanath Swami Maharaj ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Shri Govind Ghosh Prabhu ki jai. So thank you, Govind Ghosh Prabhu, for giving an exciting journey of your interactions with Maharaj, and also explaining that how Maharaj's presence is there in our life without uh, physical interaction, beyond time and space. Now we request Prem Sarup Prabhu to make his offering, and Purushottam Nitaya Prabhu to be ready, and after that Shri Narasimha Prabhu to be ready. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामीति नामिने. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता. I'll read offering that I wrote, a small one. Respected Gurudev, please accept my prostrated and humble obeisances. Your loving embrace and your concluding remark as you were leaving Calcutta at the airport. I'm honored to serve you all here. I'm really amazed and happy to see your compassionate heart. I'm unqualified and filled with all vices, but you're accepting me with so much love and privilege. You're accepting me as your own, Koro More Atmasat, and that's my only hope in my journey in this material world. I may slip and trip at any moment, but you shall always be there for me. This is my confidence and hope. I am very grateful to you for the opportunity to serve here at Calcutta, the birthplace of Srila Prabhupada. Your encouragement that we are so privileged to together do something wonderful to fulfill Srila Prabhupada's desire makes my life so meaningful. As we offer our lives in this way, monsoons of mercy of the Lordships will shower upon all of us. I want to offer my life in dedication, but for my tottering feet shaking with lust and envy. O Master, I want to strongly hold on to your feet in spite of my shortcomings and be persistent. It is your blessing that can take me through and make me qualified to do some part in this holy mission. Your Kartik Yatra lectures and the lectures at Calcutta made us drown in Lord Chaitanya's pastimes and teachings. You are strongly embedding the spiritual culture in my life and training me to accept these values to my heart to become a Vaishnava. Your consistency in driving these values in our life is a thankless task you have undertaken for all of us. I am very grateful to you for being so dedicated for my deliverance. I have so much hope when I reflect on your mercy in my life. Thank you so much for your commitment to save me. I want to offer my life completely in your service and want to assist you.
in your service to your Guru Maharaj. Please give me strength to hold on to your lotus feet, O Master. Your mood to never give me up in spite all disqualifications is my hope and shelter. Thank you so much again for being there for me. I want to remember and recall this again and again to feel fortunate and sincerely offer my life at your lotus feet. Hare Krishna, your unqualified servant, प्रेम स्वरूप दास। तो हमारा बहुत ही सौभाग्य है कलकत्ता श्रील प्रभुपाद जी के जन्म स्थान में, और स्पेशली यहाँ पे न्यू टाउन में सेवा करने का जो अवसर प्रदान हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसके कारण महाराज जी का इतना सानिध्य और उनकी वाणी और उनके आदेशों का श्रवण और सेवा का जो अवसर यहाँ मिला है, ये इट इज़ लाइक गुड फॉर्चून। बिकॉज उससे पहले जैसे गोविंद घोष बता रहे थे कि हजारों हजारों भक्त हैं और कहीं हम भी हैं तो श्रवण के माध्यम से वो संग तो प्राप्त होता ही था, पूना यात्रा, कार्तिक यात्रा, पर जब 2019 में ये सेवा का मौका मिला तो तब से द गुड फॉर्चून। तो शुरू में मैं सोचता था कि यहाँ पे मंदिर के निर्माण और प्रोजेक्ट के निर्माण की सेवा मिली है, ये तो असंभव कार्य है और हम क्यों कर रहे हैं इसे मतलब ऐसी कोई क्षमता नहीं है। परंतु जब मुझे पता चला कि हम महाराज जी से मिलने जाएंगे और समय बिताएंगे, उनसे आदेश सुनेंगे और ये सब कुछ होगा, तो मैंने कहा ठीक है, क्वालिफाइड नहीं है पर इतना कुछ मिल रहा है तो हाँ बोलने में क्या चलता है राइट। और जो एसोसिएशन हमें मिला 2019 में, इट वाज सो वंडरफुल। मुझे याद है महाराज जी से हम मीटिंग में मिले थे, उससे पहले रात को मिले थे, तो महाराज जी योगा ग्रुप को प्रवचन या प्रोग्राम दे रहे थे, उसके बाद गौरांग प्रभु के साथ हम बैठे थे, तो महाराज आए और महाराज जी कई बातें कहें, मुझे बहुत ही अच्छी तरह याद है। तो एक बात महाराज का है कि श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा अपना जीवन जो है पंच तत्व की सेवा और उनके प्रचार और प्रसार, पृथ्वी तया से नगरादिग्राम सर्वत्र होय भी प्रचार मोरा नाम, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। तो फिर महाराज कहे कि अब पंच तत्व की बारी है कि श्रील प्रभुपाद जी की महिमा का गुणगान वो करेंगे उनके जन्म स्थान में, और हमें ये अवसर मिला है उनको असिस्ट करने का। तो ये चेतना मैं महाराज से सुना, मतलब कि हम पंच तत्व जो हैं, निताई गौरांग जो हैं, वो प्रभुपाद जी के लिए मंदिर के निर्माण का जो है बेड़ा उठाएंगे, उनकी प्रभुपाद की कीर्ति का गुणगान करने के लिए। तो ये चेतना महाराज जी की संगति से मुझे लगा कि जैसे हम प्रभुपाद को असिस्ट करते हैं टू ग्लोरीफाई निताई गौरांग, बट दिस प्रोजेक्ट इज असिस्ट निताई गौरांग टू ग्लोरीफाई प्रभुपाद। एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे भी लगा कि निताई गौरांग पहले आए और श्रील प्रभुपाद जी आए थे बट कुछ हुआ था तो राइट, आई थिंक तीसरी बार तो श्रील प्रभुपाद जी मेरे हिसाब से शायद जिस दिन इंस्टॉलेशन था उस दिन ही आए। तो जैसे कि जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स होते हैं वो तो उसी दिन आते हैं और निताई गौरांग तो बहुत समय से पहले यहाँ पे आ चुके थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे जो बाढ़ भी हुई राइट, निताई गौरांग के आने के बाद, ऐसे नित्यानंद प्रभु आते हैं, पंच तत्व आते हैं तो बाढ़ भी लेके आते हैं कृष्ण प्रेम की, तो यहाँ बाढ़ भी हुई। तो उसके कारण हम सबों को संकेत मिला कि इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है। तो ये मेरा मानना है, मतलब महाराज जैसे कहे कि ये जो प्रोग्राम यहाँ पे है प्रभुपाद जी की कीर्ति के लिए, ये स्वयं हमारे निताई गौरांग लिए हैं और हम सब उनके अनुगत होकर सेवा करेंगे, तो फिर
हो जाएगा। और हर चीज़ मैं देखता हूँ कि जैसे होनी थी, शायद जिसका टाइमिंग उनका है वैसे ही होता है। हमारी जो मीटिंग होने वाली थी फर्स्ट फेज कंस्ट्रक्शन की, राइट, तो उसके लिए कई सालों से परिश्रम चल रहा था, डिज़ाइंस बन रहे थे, आर्किटेक्ट भी बन रहे थे मतलब अलग अलग चीज़ें हो रही थी। तो गोवर्धन इको विलेज में जाके महाराज जी से मिलने का हमको चांस मिला, तो हम सब गए थे। हैं, 2019 के बाद अगली यात्रा थी महाराज से मिलने की जी में, तो मैं बहुत ही रोमांटिक था कि अभी भी कुछ होगा पर पता नहीं भगवत कृपा जब आती है तो तब कोविड का ज़माना था और कोविड हो गया था, ये सेकेंड या थर्ड फेज कोविड चल रहा था पता नहीं। और कोविड की टेस्टिंग होती थी महाराज से मिलने से पहले और पता नहीं वो जो डॉक्टर थे वो सबका टेस्टिंग की और फिर मेरी बारी आई और फिर मेरी टेस्टिंग की बहुत खुश हो गए बोले इतने हजारों लोगों का हमने किया है, आज मेहनत रंग लाई है, आपका कोविड पॉजिटिव है मतलब मीटिंग के लिए वहीं जाना था आश्रम, और यहाँ पे टेस्टिंग हो रही थी क्वालिफिकेशन, और मैं पॉजिटिव था तो मेरे साथ जो भी थे उनको भी कहा कि आप सब भी क्वारंटाइन, ये भी क्वारंटाइन। फिर उसके बाद शायद एम्बुलेंस बुलाया गया था, अकेले बिठा के मुझे भेजा गया था और मैं जीवी में था, बट महाराज जी से तब मिलना हुआ नहीं और मेरे कारण फिर वो मीटिंग भी बाकी लोग नहीं कर पाए थे। उसके बाद भी नेक्स्ट टाइम मीटिंग के लिए आचार्य रत्न प्रभु और अनंत भगवान प्रभु गए थे जीवी, राइट, पर तब भी जिस प्रकार से एक्सपेक्टेड था वो मीटिंग हुआ नहीं। फिर आचार्य प्रभु ने बताया कि महाराज जी कहे कि बॉम्बे में कि मैं इत्मीनान से आना चाहता हूँ और भक्तों के साथ मिल के फिर उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। तो महाराज जैसे आचार्य को बताते हैं कि जो भी चीज़ करते हैं उसको पूरा फोकस्ड वे में करते हैं और उसे ऐसे निपटाने के मन से नहीं करते, उसे प्रभुपाद जी के लिए ऑफरिंग है उनकी, उसको बहुत ही ध्यान से करते हैं। तो जैसे महाराज जी ने कहा था, फिर इस बार जब इंडिया आए तो कलकत्ता का प्रोग्राम ऑलमोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी में था और महाराज यहाँ पे मायापुर आए। और जैसे आचार्य भी बता रहे थे, हर दिन ऐसा था कि महाराज आएंगे क्या, कितने दिन रुकेंगे, या बट महाराज स्टेड फॉर सो लॉन्ग एंड यहाँ पे न्यू टाउन में भी महाराज ने पूरा समय दिया। और ये एक बात थी कि इतने दिन प्रोग्राम हुआ बट जब न्यू टाउन में आए उस दिन इतनी बारिश हुई मतलब और सारे बस, तो उस दिन मुझे लगा कि अरे इतनी बारिश हो रही तो शायद महाराज जी नहीं आएंगे, पर इतनी बारिश हुई फिर भी प्लान वाज सेट एंड महाराज केम। और महाराज दर्शन लिए और फिर जो मीटिंग के लिए सालों से प्रतीक्षा हो रही थी, राइट, तो महाराज फिर प्रेजेंटेशन देखे और फिर मैं ऑब्जर्व कर रहा था महाराज जी को, तो मैं देखा कि महाराज सब चीज़ों को बहुत ही गौर से समझते हैं, गौर से देखते हैं, हाँ, किसी भी चीज़ को फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं करते। और करने के बाद उस मीटिंग में डिस्कशन, जैसे गौरांग स्वरूप बता रहे थे, अलग अलग डिस्कशंस हो रहे थे, बट मैं देखा महाराज इज़ वेरी क्लियर इन हिज थॉट प्रोसेस, वो सारे डिटेल्स को समझते हैं और बहुत। तो हम कुछ भी प्रश्न पूछ रहे थे कि इसको ऐसे करना है क्या, वैसे करना है क्या, तो महाराज कहते हैं कि व्हाट इज़ योर पर्पस, आप क्या हासिल करना चाहते हो, पहले वो आप लोग निर्णित कीजिए, उसके बाद कैसे करना है, क्या डिटेल है, वो क्लियर हो। सो ही वुड ऑलवेज, he would ask him like, should we do this, should we do that, and Maharaj would say, what is the purpose you want to accomplish, and based on that उसको किया जाए। तो ये एक मैं प्रिंसिपल महाराज से मुझे लगा कि मैं सीखा कि कभी भी किसी चीज़ में डिसीजन लेना हो तो पहले क्लियर हो कि क्या पर्पस है उसे करने का, फिर हम
डायरेक्शन पता लगेगा कि कैसे उसे आगे बढ़ाना है। और फिर महाराज ने बहुत प्रैक्टिकल इनपुट्स और गाइडेंस दिए सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। और महाराज बहुत ही कलकत्ता से उनका हृदय जो है बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है और उनकी तीव्र इच्छा है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी के गुणगान के लिए, उनकी महिमा के लिए कुछ अच्छा प्रोजेक्ट हो और पूरे प्रभुपाद जी के जन्म स्थान और अदर प्रोजेक्ट्स में भी डेवलपमेंट हो। तो ये बहुत ही हमारा सौभाग्य है, या मेरा सौभाग्य मैं समझता हूँ कि यहाँ सेवा करने का अवसर है, जो एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद जी का, और महाराज जी बहुत ही उस पर कमिटेड हैं। तो इस प्रकार से सेवा मिलना और उसे करने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलना, ये आई फील इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट फॉर्चून दैट वेरी रेयरली वी अचीव। तो मैं आशा करता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये जो बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, हम सबको मिला है, मैं इसको और ज़्यादा इसकी महानता को समझूं और उसके प्रति समर्पित होकर सेवा करने की चेष्टा करूं, और उस प्रकार ट्राई टू ऑफर सम सर्विस। और मुझे शक्ति दें महाराज जी कि मैं भक्ति में टिका रहूं या करता रहूं और सेवा भी करता हूं। हरे कृष्ण। राधानाथ स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रेम से प्रभु जी। अभी हम हिज ग्रेस पुरुषोत्तम निताय प्रभु को बुलाना चाहेंगे। So I seek blessings of Sri Srinitaya Gauranga Srila Prabhupada and all the assembled devotees so that I can say something, although I am not qualified to speak some words in the glorification of His Holiness Radhanath Swami Maharaj on his 73rd Vyasa Puja. So devotees have been very wonderfully explaining. So here, like some of the teachings of Maharaj and what are the important lessons what we can learn. So that I have got it from Maharaj's lecture and from other devotees. So I will try to share those. So one of the incident which Maharaj shares and what important lessons which we can learn. So I will just share those things. So Maharaj speaks in one of his lectures that it was back in the 1980s, one time while hitchhiking, I was walking down the road and I was picked up by a big limousine. When I got in, I saw one of the most famous, highest paid at that time, one of the most highly paid television stars in America. He was earning and making profit over $20,000 a week. And along with that, he was earning so much money in the commercials and other things. And his show on American television was number one, and it remained for 7 years consecutively. And that person, that famous Hollywood star, so he told to Maharaj that I own a mansion in Hollywood, I own a Mercedes, Toyota, and it is all paid for. And he was having a relationship with the most beautiful movie actresses in all the world, and every week he was having, and they were his co-stars, and he was in the class of society. This Maharaj is saying that he was in the class of society that so many millions of people wanted to be in, and all the big musicians, all the big movie and television stars, all the big politicians, he used to mix with them, drink with them and play with them. But that person, he told to Maharaj that I am the most miserable person. And he said that every one of these big people, I know them intimately, and they are all similarly lonely and miserable. And when you see them on the stage, they may put up a very big smile on the stage. And he said that why do they
put up this big smile because they are expert actors and actresses, but in their hearts they are lonely and they are completely miserable. So that Hollywood star, he was sharing his feelings with Maharaj. That was in 1980. And when Maharaj was on his car, so while driving in that car in Thailand, this is the incident of Thailand. So there were some simple people, and on their hands and knees they were picking rice, and with their little hats they were having to protect them from the sun. And that person was saying that I would rather like to socialize with these people because they have some real substance to their life. And all these big people, they are always trying to be someone they are not, and they are completely hollow from inside, and have complete shallowness inside. And that person, he looked at Maharaj and he said that I want what you have. And then Maharaj is saying that, are you sure? Because, I was hitchhiking on the side of the road and I was walking, and you have picked up me in Mercedes and limousine, and I do not have anything. And you are going to stay in a Hilton hotel in Bangkok, which is very costly. And I do not know that where I am going to stay. So, but that movie star, he was saying that, but in spite of that, I like you, I want to be like you, because you have some peace and I do not have any peace in my heart. And I am ready to give up all these things for a little peace in my life. So this is one of the important lessons which Maharaj is saying, that no matter how much material success we might be having, but whatever we are looking like peace or happiness, that actually is lacking in those people, big people, which many of us, or many like people outside also, sometimes we think that they are very happy, very great people. So this is one of the incidents which Maharaj shares, and one of the lessons which Maharaj is saying, as devotees were also very nicely explaining, and Asaran Prabhu also beginning, Prem Prabhu also told that what Maharaj writes about that. Maharaj, the heading that what is the mantra for dealing with suffering, and Maharaj says that we should be looking for opportunities and not obstacles in life. So Maharaj says that no doubt there are reversals, calamities and crises happening all around us, but how we perceive them is still our choice. The world is a mirror of our own consciousness. Nobody sees the same thing. We see according to our own state of consciousness. The world is just a mirror of our own attitude. For example, one person may look at a rose bush and complain that it is full of thorns, while another person may rejoice looking at the beauty of the rose flower in the thorny bush. And externally, they are seeing the same thing, but they are actually not seeing the same thing. They have different attitude in processing what they are seeing externally. One is focusing on the rose while other is focusing on the thorns. So if you have a rose colored eyes, then everything around will appear like red rose. And if you have like yellow colored glasses, so everything will look yellow to you. And if you have green color, then everything will look green to you. So Maharaj further says that opportunity only knocks once, but when any opportunity knocks, then people often complain about the noise. And every situation holds in its is an opportunity for growth, for purification, and for realization, and for higher experience. So our perception, that actually determines our responses and our destiny. And then Maharaj says that if we see in that way, that will be the result. But if we are just fighting against the situation, complaining about the situation, then we will be completely distressed, always distressed, will be miserable, and also we are going to make everyone around us completely miserable. But if we are attentive, then we could spot hidden opportunities even in difficult situations and circumstances. So this is what it means to control the mind, because Krishna says in Gita that for one who sees me everywhere and everything in me, for him I am never lost, nor he is ever lost to me. So if you are looking for God, if you are looking for truth, if you are looking for an opportunity to learn and enrich your lives in every situation, you will find how to grow in whatever situation you are in. So Maharaj shares one beautiful anecdote or analogy which Prabhupada had given. So there is one incident from Prabhupada's life which Maharaj is sharing. So Maharaj speaks about Prabhupada that I remember when Srila Prabhupada, my Guru Maharaj, he came to the West in 1965. So he left a very beautiful holy place called Vrindavan in India where he was living, but he wanted to give it up to present this message of dharma, of love of Godhead in a very universal way.
He wanted to present it to the whole world. So at the age of 69, he boarded a cargo ship and came to America. When he came to America, he was 70 years old and had no acquaintances or monetary support. He only had 40 rupees, which he could not exchange, so practically he had nothing. He came with just few books he had written, but most importantly, he had a heart which was full of compassion. He was living in a ghetto called Bowery in New York for a while, and nobody was really taking interest. But little by little, few people of the counter culture or hippies started taking a little interest in what he was speaking. And a few years later, he had thousands of disciples and humble temples. Shri Nitai Gaurang Bhagwan ki Jai, Srila Prabhupada ki. So Maharaj is further saying, and a few years later, he had thousands of disciples and hundreds of temples in all continents. And he had printed, published, and distributed hundreds of millions of books all over the world. So there was one gentleman, so he was very confused and puzzled. So he wanted to know that how this old man could do so much thing at this age. So Maharaj says that that person, he asked Prabhupada that how did you do it? Then Prabhupada explained in a very wonderful analogy. So what Prabhupada explained, so Maharaj is saying that Prabhupada is saying this thing, that once there lived a man, a person who did not have anything, but he wanted to start a business. So he was walking down the road and he saw an old dried up pumpkin. So what he did, that person, that generally when we see any old pumpkin, dried up pumpkin, so generally we will ignore it. It does not value for us. But that person, he picked up the dried pumpkin and he then continued walking. Then later on, what he does, he sees a branch of tree lying on the side of the road. And he picked up that branch of the tree also. And then later he goes a little forward and then he finds that there is a wire and he picks up that wire also. So this analogy that Prabhupada is giving, picks up that wire, and what that person is doing, he takes the branch and he connects the dried pumpkin to the branch and pushes the wire around that. And by that, what he did, he made a musical instrument. And by that musical instrument, he started his business. So Prabhupada was saying that in this way only I started the spiritual society. Because whatever I found, I just picked it up. So at that time, I did not neglect anything. And I just saw the beauty and the value of it. And everything I thought that can be used in the service of Krishna. So this is what Maharaj is saying, that in whatever situation, whatever circumstances we might be, we should always see the opportunity that how we can serve Krishna. So in recent Kartik Yatra, so Maharaj was very wonderfully explaining just 3 points I would like to share what Maharaj said and how it can be very much useful in our life if we apply it in a way which Maharaj is explaining. So one of the points was Maharaj was saying was that spiritual life does not mean that the things are going to go as per our plan, that Maharaj shared. So Maharaj is saying that only a neophyte devotee, he thinks that as soon as he starts practicing devotional life, the things are going to go as per his plan. The reason that because Krishna is going to act in a way that is going to purify us, and Krishna knows what is required for our purification. So Krishna is going to act accordingly. So this is what Maharaj, one point Maharaj explained. The second important thing what Maharaj was explaining, that mature devotees, so they never leave the shelter of Krishna in spite of difficulties, obstacles and heartbreaks. So in the previous discussion, we saw that how Prabhupada, like in spite of difficulties, he continued how he can serve Krishna. And in Maharaj's life also, as devotees has been explaining, and Maharaj's life also we have heard many times that in spite of so many challenges, Maharaj's life has been continuing, like spreading the Krishna conscious glories throughout the world. So two things Maharaj speaks here. So Maharaj gave a very important message, and Maharaj says that our spiritual life should be unconditional. There should not be condition that if things are going in our favor only, then only we are going to practice Krishna consciousness. And the second thing which Maharaj says, which is very interesting and very important, it touches our heart also. Maharaj is saying that even if we are unhappy and we are taking shelter of Krishna, then that unhappiness is actually not unhappiness because Krishna is there with us always. This is what Maharaj is saying. So that unhappiness is not actually unhappiness. So, and the third important point which Maharaj is sharing is that after billions of births and deaths, we have got an opportunity to associate with the devotees and to practice this devotion to Krishna. So we can understand that how
fortunate we are or how much merciful devotees have been that we have got this opportunity. So Maharaj is again saying that this human life, we should try our best to use this opportunity in the service of Krishna so that we can dedicate our life in the service of Krishna. So after millions and billions of our births, like my birth and death, I have also got an opportunity to get the shelter of the lotus feet of Maharaj. So I pray to Maharaj at this in this today this most auspicious day is this of Maharaj Vyasa Puja, that I can also follow what instruction which Maharaj has given, and I can also follow his instruction and apply it in our life, and then I can also be an instrument in serving Krishna and serving all the devotees and all the Vaishnavas. Hare Krishna, thank you very much. His Holiness Radhanath Swami Maharaj Vyasa Puja ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare. His Grace Purushottam Nitaya Prabhu ki jai. So now we request Sri Narasimha Prabhu to make his offering. Meanwhile, Pad Prakshadan will also start. Yes. Hare Krishna. So I'll just share 3 points which I came across. I came across many points, so I just share 3 points of in relation to holy names. So in 2011, in the initial days, when there was Prerna festival, like which Prabhuji was mentioning, Sri Goshala. So in that Prerna festival, it's like a very historical Prerna festival, where all the 3 Maharajas were there. It's like unbelievable. From Puja Jayapataka Swami Maharaj, from Puja Bhakticharu Swami Maharaj, and Param Puja Radhanath Swami Maharaj. So one of the point which I can never forget, which always reverberates in my mind is Maharaj was saying that the holy name is the home. Maharaj was saying that. So Maharaj's every sentence, like many of you shared it, he really means it. So Mahatma Anastu Mam Bharta Daivim Prakriti Mashrita. So they're always under that Yogamaya potency, and their outlook of the world is totally different. The same thing which we see in a certain outlook, they see in a totally different outlook, like many of you have shared it. So second one, which Maharaj quotes often is, if one doesn't chant the 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra attentively, at any point one falls down. So this was very, very deep, another very, very deep statement. So which I could see it over a period of time, realize to whatever extent over a period of time. So when we chant very attentively, the outlook and the world around is, the day how it goes, it's totally different. And again, when the chanting is not so good, very proportional to the 16 rounds, the day goes. So that was another very spectacular thing. I could see it little at in the initial days, but over a period of time, I could perceive its importance more and more and more. So especially last year, I could see that I was sharing with many devotees that while book distribution, I mean last year we were going to the schools. This year also we are trying to whatever extent.
So when we are going to the schools last year, in proportion to the extent I was desperately praying to Lord to be engaged in His service, um, to place in the birthplace of Srila Prabhupada, uh, like instruction of Maharaj. I remember in relation to this, there is. In 2008, Maharaj gave one very powerful lecture in Calcutta. I think all the senior devotees were there. So Maharaj was mentioning about the glories of Calcutta. Calcutta, it was so systematic, so clear, with pastimes and with so amazing actually. So that was the lecture. It was like a turning point for me to get very strongly connected to serve in Calcutta to whatever possible extent. So, like that lecture where Maharaj mentions so many glories about Calcutta and how the situation of Calcutta is at present, and are you not worried about this particular point in relation to Calcutta? So that always, it's like always, um, it's a historical experience hearing that lecture which I got from my counselor that time, His Grace Sankirtan. So actually, this a prayer, like when we chant in this mood of engaging in the service of pure devotee to whatever possible extent, to please the Supreme Lord, my Lord, please engage me in pleasing you. So that really impacted the consciousness and the outlook and the situations. There are so many ups and downs that we come across. So, like today, Maharaj was mentioning a point that what is a proof that your chanting is good? I mean, I'm not phrasing the complete straight. So, the proof is your service, your attitude to do the services will also increase proportionally. So, Maharaj was mentioning it's like really reverberating statement, another statement. So I could really realize that particular point to a very great extent how it is holy names, that holy name who controls everything, who does everything. In fact, all the whatever results we see, whatever preaching that happens, and whatever thought process, and whatever words we get. It is all, it's completely in the hands of Supreme Lord. So, to the extent we could take shelter of Guru Maharaj, to that extent we can take shelter of holy names, and to that extent, Prabhupada says that we can become fire by entering fire. So, by associating with the fiery words of the pure devotees, so we can also feel part of Sankirtan. So, I seek blessings of all the devotees so that I can be part of Sankirtan. Hare Krishna. His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki jai. Shri Narasimha Prabhu ki jai. Request Nimayanand Prabhu to give his offering, and then after that, Amar Kishore Prabhu. Then they will start Padaprakala. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Radhanath Swami Niti Namane. I'll just read my offering, what I wrote. Dear Gurudev, please accept my most respectful, prostrated obeisances unto your lotus feet, unto your divine lotus feet, which give shelter to even the most lowest
who are ready and eager to receive that shelter. Your mercy is unlimited. You shower your love and mercy by so many ways, by your personal example, by your lectures, by example and teachings of your dedicated disciples, by your so many projects which has deep compassionate heart of yours and your love for Srila Prabhupada. How much you have mercifully made yourself available in each and every one, to each and every one of us is just amazing. I can't just understand when people say you are very difficult to be accessed. I see you have made approach to you so easy and simple because you are compassionate and merciful, and because you love Srila Prabhupada and you wish to distribute Srila Prabhupada to everyone. Although your mercy is available easily, I am so unfortunate that I don't receive it. I am too egoistic and proud to become serious to receive your love and mercy constantly coming. Actually, what can I be proud of? By your causeless mercy, recently, when I was feeling proud, thinking myself great, when I reflected back, I found how did I get here? What was surprised to understand? It was none of my qualities. It was you who inspired so many things in my life. It was your devotion that somehow slipped in my heart and I felt relieved. I was burning in the forest fire. Your merciful teachings and examples is like rain cloud which extinguish the fire of material existence. Your absorption in Mahaprabhu Kirtan and dancing and singing with playing of instruments is what inspires some devotion. What else what we are. Because you are absorbed in such ecstasy, we continue with hope that someday we will also become mad for Krishna like you. Your amazing dedication is worshipping deities and dressing them wonderfully and cleansing temple is the greatest inspiration. You taught others and gave us all opportunity to serve the deities by giving us Nitai Gauranga. In Archan, we are assisting you to worship them. You are tirelessly, uh, you have tirelessly cooked bhoga for the deities, and you always take pleasure to see how the devotees relish Krishna Prasadam. And you are absorbed in constantly in the holy names, pastimes, and qualities of Shri Shri Radha Gopinath. You are super expert in making arrangements for so many varieties of project to engage so many devotees as per their talents. You are directly the manifestation and representation of Paramatma within and Krishna for in our life. And surely it is only by your mercy and by your pleasure that we please Krishna, we please Srila Prabhupada. And your displeasure surely has no means for us. And hence we bow down to your lotus feet constantly. I feel completely humbled today on your divine appearance, humbled by my own hundreds of shortcomings and seeing the loving devotion and sincerity of so many of your sincere and dedicated servants. But whenever I hear that you are forgiving and compassionate, I feel again very hopeful. I know that you will accept me despite my shortcomings. Please let me never take your mercy for granted. Once I heard that one devotee offered obeisances to you and asked you, Gurudev, please keep giving your mercy. And you replied, please keep receiving. It is very clear, it is very clear because of your merciful nature. You are always showering your mercy on most unqualified also. But we must be qualified to receive it. We should be attentive to receive it. You are showering your mercy through so many deep, powerful lectures which shake our material life from very roots, through your personal example of how to deal with juniors, equals, and seniors, through your dedicated followers who are constantly teaching us your mood, and through most practical services you are giving us, especially in this holy birthplace of Srila Prabhupada. But we need to receive this mercy by hearing attentively your lectures, by taking them as personal instructions, by imbibing your personal example and striving to live by it, and by accepting the service you have given us with your heart, with our heart. I was hearing
from you today the pastime of New Vrindavan, where once you were given the service of garlanding Srila Prabhupada. And as Srila Prabhupada came to New Vrindavan, he sat on the Vyasa and then you had a garland on your tray, and then you took the garland and you were just about to keep the garland on Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada put his head down to receive the garland. At that point of time, you know, you were sharing that how you were looking at Srila Prabhupada and you were not garlanding, and Prabhupada was through his eyes was saying, okay, garland me. But then instead of garlanding yourself, you gave the garland to your senior sannyasi godbrother, and then he took the garland and he garlanded Prabhupada. But Srila Prabhupada didn't look at that sannyasi godbrother, and he was looking at you and he was smiling and very happy. And that point of time you said that Srila Prabhupada although didn't said anything, but through his eyes and gestures he said so many things. And Srila Prabhupada said that yes, you have understood. To be the servant of the servant is the best way to please me. And then you shared that that was the most wonderful instruction I ever got, and I am trying to follow that with my heart and soul. Through your example, you have shown how powerfully you are following this instruction. As you have nothing else as priority, in every project you wish to serve your God brothers. In New Vrindavan, despite all the troubles, you just continued because you saw this as serving Srila Prabhupada's servant. This is the instruction you have repeatedly given all of us. So much so that this is part of initiation vow we take to become your official servant. As years have passed by, I am not progressing, Gurudev. One thing I am able to understand now better, that if I stick to the basics of Krishna consciousness very seriously, strictly, and without any ulterior motives, as taught by you again and again, then surely my life will be successful. I am very insignificant, and hence I don't see if I can do anything great in your mission. But I pray for your causeless mercy to be able to stick to the basics you have given us. Trinadapi sunichena, na dhanam na janam, das dasanudas. If I can follow these and chant Hare Krishna, I hope I can please in some way and my life will be successful. Today on this auspicious Vyasa Puja, I fall at your feet and ask for spiritual strength to follow the vows I took at the time of initiation, to be able to chant Hare Krishna 16 rounds as attentively as possible, follow four principles strictly, to serve Srila Prabhupada's mission in the mode of humble servant of the servant of the servant. I offer prayers as spoken by Srila Krishnadas Kaviraj. Durgame pathi me anthasya skhalat pad gater muhu swagripa yasti danena shanta santi avalambanam. My path is very difficult. I am blind and my feet are slipping again and again. Therefore, may the saints help me by granting me the stick of their mercy as my support. Let me be qualified to receive your constant mercy by following your instructions. Let me give priority to hearing your Vani and priority to apply that in my life. Give me strength to fight with my uncontrolled mind and senses. Give me strength and determination to serve all devotees, juniors, equals, and seniors in sincere, humble mood of servant of servant. Let me give up my duplicity and let me become simple at heart, simply absorbed in hearing and chanting the glories of the Lord and His dear devotees. In this way, let me execute whatever service you give me through your representatives and simplicity. Finally, thank you, Gurudev, for giving us this wonderful association where all this is possible. Your aspiring servant, Nimai Anandadas. Nimayanand Prabhu ki. Thank Nimayan Prabhu for his wonderful offering. Request Amar Kishore Prabhu to give his offering. Hare Krishna. I'm feeling very unworthy to sit here and speak in front of such senior devotees.
but I'm just trying to follow instruction of devotees. I'll also read my offering which I had written. Dear, dear beloved spiritual master, this is your unworthy disciple, Amar Kishore Das. In broken words, attempting to appreciate your divine intervention in my unfortunate life. Recently, after a gap of 4 years, I had the great fortune of being a part of Kartik Yatra, the most memorable part of which was to associate with the enthusiasm, service attitude, dedication and humility of the devotees of Sri Sri Radha Gopinath Mandir. As you often say that from a drop we can evaluate the qualities of an ocean, in the same way, by getting a glimpse of the community at Sri Sri Radha Gopinath Mandir, I could get a small understanding of your magnanimity and the extent of love and affection you had showered upon the devotees at this community. Through the yatra, I am getting to experience the same love and affection to some extent. And truly speaking, Maharaj, I am just feeling thrilled and enlivened by that. I don't want to lose and forget any of these moments. I felt as if I am getting newer and deeper insights of what is spiritual world like and what kind of loving personality Krishna is. It was appearing those things which I have been hankering for whole life have started to manifest in front of my eyes in that association. And I could clearly understand that this is not because of my advancement or something, but only because of placing myself in the midst of sincere, dedicated devotees who have only pure aspiration to become servant of Shri Shri Radha Gopinath. And that intense association is what is actually awakening these emotions. I would like to mention some important points which I noted in your lectures in the evenings at Puri Dham and pray and aspire to imbibe them in my life all throughout till the last breath if I am allowed to. You told us the mood in which we should be chanting the holy names. It really touched my heart. You said that we are chanting Hare Krishna not to enjoy Hare Krishna, but to invite the divine couple to enjoy our devotion for them. We don't go to temple to see Lord Jagannath, but to be seen by Lord Jagannath. That is bhakti. You told us that we shouldn't see obstacles as obstacles, but should translate them as Krishna's signals to give us the necessary impetus to depend on Krishna wholesale. Whether there are obstacles or no obstacles, but at the end of the day, we have Krishna with us. What is definition of happiness? What I like to be, or making the higher principle of serving the Lord's devotees? You told us the joy of self-importance or self-respect is insignificant to the joy of respecting and honoring others. And we make advancement by how much we take shelter and how much we are dependent on Krishna's mercy. Envy for devotees is actually envy for Krishna. The gopis felt themselves incapable of pleasing Krishna, but they were not feeling unhappy about it. The less and unqualified we are, the more we can taste the holy names. I'm feeling extremely grateful that you chanted every day morning during the yatra in the midst of devotees in front of Tulsi. It was my first experience to get to chant all my rounds in your vicinity and presence. I can't express how happy and secure I was feeling when I got to chant like this. I'm eternally grateful for kindly bestowing all these gifts upon an undeserving soul like myself. Thank you, Maharaj, for accepting me with all my deficiencies. Though I am good for nothing, but you have kindly picked me and engaged me in the Lord's service. Frankly speaking, I am a third-class disciple who, despite hearing your instructions repeatedly, still commits the same mistakes again and again. I wish to be at least a second-class disciple, that at least I do whatever you instruct. uh, I just want to mention a couple of instances which I noted in which I could recollect in recent past. So Maharaj visit to Kolkata. So he had given a lecture in Guru Sadeh Road. So through his simple gestures, Maharaj taught us that how we should be sensitive to devotees' feelings. So Maharaj was speaking, and His Grace Anang Mohan Prabhu was translating in Bengali. So whenever Maharaj would speak very punching point, then Anang Mohan Prabhu would
translate it and also add to that a loud Hari Bol, like that. So, so he used to do for a few instances, and Maharaj suddenly stopped and looked at him. You are my translator. And then, and then he smiled, and then he continued. But then Anand Mohanpu got the point, and he did not do that anymore. So I mean, it was very amazing to see that Maharaj exactly knows how to convey the point, at the same time not hurt the feelings of the devotee, and remaining sensitive to the emotions. Uh, that was very memorable, and also. Uh, like in the morning, Acharya Prabhu said that Maharaj told that whatever energy I have, I want to use it to encourage devotees and inspire them. So actually, it's not that Maharaj is just speaking, but he has already started doing it. So I just came to know, I got to hear that when Maharaj came to India so these devotees had gone to Maharaj to make three requests in front of him. So the first one was, Maharaj, kindly do Kartik Yatra this year. Second was, Maharaj, please accept Vyasa Puja ceremony from your disciples. And third was, please give initiations. So Maharaj said yes for all of them. And we see that already he fulfilled the first two desires. So Maharaj, whatever he speaks, he doesn't just speak, but also he does it, like all devotees have been mentioning. And thirdly, uh, I think during the last Vyas Puja, we got a very confidential audio tape from secretary of Maharaj in US. So she was sharing some very confidential instructions and and services which Maharaj was doing in America for so long. So, so she was sharing that how Maharaj innermost desire was to make the desire of Srila Prabhupada come true. Srila Prabhupada began preaching Krishna consciousness in the West, and he wanted the Western devotees should take to spiritual life, take to Krishna consciousness, and pave their way back to Godhead. So during Prabhupada times, it started in a big way, and it spread like wildfire. And then that same fire got ignited in India, and now in India the preaching is flourishing so nicely. But but in the West the preaching went down, and now it's very little. So Maharaj wants that that the desire of Srila Prabhupada should come true even today and should continue to be true forever. So Maharaj just doesn't want to preach, but he wants to create a platform where devotees can come from India and other places and inspire Americans and Westerners to take to devotional service and let the preaching flourish even in the West. So the secretary was telling that how Maharaj is going and approaching to all the big celebrities like the Hollywood stars, whom for whose appointment even great people have to wait for so long. So Maharaj is going and spending time and discussing Chaitanya Charitamrita and inspiring them to chant Hare Krishna, and also they are coming to the point of taking initiation. So I was really touched to see that how Maharaj is so much deeply connected within his heart to the desire of Srila Prabhupada, and and setting such a nice example for all of us. So on this auspicious day of Vyasa Puja of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, I wish to pray that 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 as Maharaj said that he has put his energy, his realizations, everything through his lectures, and through his lectures he is giving these instructions. So I pray to Maharaj that I can understand and assimilate these instructions and follow them and remain chaste to these instructions all throughout my life. And also I always act, think, and speak. I don't act, don't think, and don't speak in a way that will bring displeasure
to him, and always act, think, and speak in a way that will please him. And also, I pray that let me be grateful with humility and with great attention serve his servants under whose care Maharaj has kept put me in. So, with this prayer, I would end my offering. Your undeserving disciple, Amar Kishore Das. Amar Kishore Prabhu ki jai. Now we'll have Path Prachalanam. Request His Grace Nitaya Prabhu to lead the kirtans, and so we'll have now Path Prachalam, the Bhoga offering, and then Pushpanjali. His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki jai. His Holiness Radhanath Swami Maharaj Vyasa Puja Mahamahotsav ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gurudev Kripa Bindu Diya Karo ei dase Trinapekhatihina. Gurudev Kripa Bindu Diya Karo ei dase Trinapekhatihina. सकले सहने बल दिया करो सकले सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना निज माने स्पृहाहीना निज माने स्पृहाहीना निज माने स्पृहाहीना सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथा सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ जथा यथा सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथा सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ जथा यथा तबे तो गाय
তবে তো গাইব হরি নাম সুখে, 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 অপরাধ হবে হত, অপরাধ হবে হত, অপরাধ হবে হত, অপরাধ হবে হত, কবে হেন কৃপা লভিয়া এ জন, কৃতার্থ হইবে নাথ, তবে হেন কৃপা লোভিয়াই জানা, হইবে নাথ, কবে হেন কৃপা লভিয়া এ জন, কৃতার্থ হইবে নাথ, তবে হেন কৃপা লোভিয়াই জানা, কৃতার্থ হইবে নাথ, শক্তি বুদ্ধিহীনা আমি অতি দীনা, 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 কর মোরে আত্মসাৎ, ওর মোরে আত্মসাৎ, কর মোরে আত্মসাৎ, ওর মোরে আত্মসাৎ, যোগ্যতা বিচারি কিছু নাহি পা, তোমার করুণা সার, যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায়, তোমার করুণা সর, যোগ্যতা বিচারি কিছু নাহি পায়, তোমার করুণা সার, যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায়, তোমার করুণা সর, করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া, করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া, করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া, করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিবার, প্রাণ না রাখিবার, প্রাণ না রাখিবার, প্রাণ না রাখিবার, গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া, করো এই দাসে তৃণপেক্ষাতিহীনা, গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া, কর হে দাসে ঋণপেক্ষাতিহীনা, নিজ মানে স্পৃহহীনা, এবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই,
এবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই। পতিত পাবনা তোমার বিন কেহ নাই। পতিত পাবনা তোমার বিন কেহ নাই। পতিত পাবনা তোমার বিনা কেহ নাই। যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। এ মন দয়াল প্রভু কেব কোথা পায়। 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 গঙ্গার পারস হইলে পাশ্চাত্য পাবা। গঙ্গার পরশ হইতে পাশ্চাত্য পাবনা। গঙ্গার পারস হইলে পাশ্চাত্য পাবা। গঙ্গার পরশ হইতে পাশ্চাত্য পাবনা। দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণা। দর্শন পবিত্র কর এ তোমার গুণা। দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণা। দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণা। হরিস্থানে অপরাধে তারে হরে না। হরিস্থানে অপরাধে হরে হরি নাম। হরিস্থানে
अपराधे तारे हरि नाम हरि स्थाने अपराधे तार हरि नाम तुम स्थाने अपराधे नाहि परित्राण 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 तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम 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 गोविंद का है नाम मोरा वैष्णव परा 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 प्रति जन्मे करी आशा चरणे राधोले प्रतीक्षणे करे आशा चरणे राधोले नरोत्तमे कर दया चरणे आपणार बोले नरोत्तमे कर दया आपणार बोले देवर करुणा कर वैष्णव गोसाई देवर करुणा करो वैष्णव गोसाई देवर करुणा कर वैष्णव गोसाई देवर करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावना तो बिना के हना पतित पावना तुम्हार बिना के होना
जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद गीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल হে মন দুর্মতি সংসার ভিতরে পড়িয়াছি আমি মন দুর্মতি সংসার ভিতরে পড়িয়াছি আমি হে মন দুর্মতি সংসার ভিতরে পড়িয়াছি আমি মন দুর্মতি সংসার ভিতরে পড়িয়াছি আমি তব নিজ জানা কোন মহাজনে তব নিজ জানা কোন মহাজনে তব নিজ জান কোন মহাজনে নিজ জানা কোন মহাজনে পাঠাইয়া দিল তুমি পাঠাইয়া দিল তুমি পাঠাইয়া দিলে তুমি পাঠাইয়া দিলে তুমি দয়া করি মোরে পতিত দেখিয়া কহিলে আমারে গিয়া দয়া করি মোরে পতিত দেখিয়া কহিলে আমারে গিয়া ও হে দুই না জান শুনো ভালো কথা ও হে দিন জান শুন ভালো ও হে দিন জান শুনো ভালো কথা হে দিন জান শুন ভালো কথা উল্লসিত বেহিয়া উল্লসিত বেহিয়া
उल्लसित हवेहिया उल्लसित हवेहिया तोमर तारिते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतारा तोमर तारिते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतारा हे तोमर तारिते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतारा तोमर तारिते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतारा तोमहे ना कोथो दिनहि न जाने तोमहे न कोथो दिनहि न जाने हे तोमहे ना कोथो दिनहि न जाने तोमहे न कोथो दिनहि न जाने करिले ना भव पार करिले ना भव पारा करिले ना भव पार करिले ना भव पारा वेदेर प्रतिज्ञा राखिबारा तारे रुक्मवर्ण विप्रसूता वेदेर प्रतिज्ञा राखिबारा तारे रुक्मवर्ण विप्रसूता महाप्रभु नामे नदिया माताया प्रभु नामे नदिया माता हे महाप्रभु नामे नदिया माताया प्रभु नामे नदिया माताया संगे भाई अवधूता संगे भाई अवधूता संगे भाई अवधूता संगे भाई अवधूता दसुत जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम कोरि दाना नंद सुत जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम कोरि दाना तारिल जगत तुमी ओ जाइया तारिल जगत तुमी ओ जाइया हे तारिल जगत तुमी ओ जाइया तारिल जगत तुमी ओ जाइया लोहनी परित्राण लोहनी परित्राण लोहनी परित्राण निज परित्राण से कथा শুনিয়া আসিয়াছি নাথ তোমার চরণ তলে কথা শুনিয়া আসিয়াছি নাথা তোমার চরণ তলে সে কথা শুনিয়া আসিয়াছি নাথ তোমার চরণ তলে কথা শুনিয়া আসিয়াছি নাথ
तुम्हारा चरण तोले भक्ति विनोद कंदिया कंदिया भक्ति विनोद कंदिया कंदिया भक्ति विनोद कंदिया कंदिया भक्ति विनोद कंदिया कंदिया अपना काहिनी बोले अपना काहिनी बोले अपना काहिनी बोले अपना काहिनी बोले हे मना दुर्मति संसार भितरे पड़िया आछिनु आमी मना दुर्मते संसार ভিতরে পড়িয়াছি আমি तब निज जन कोन महाजने निज जना কোন মহাজনে तब निज जन कोन महाजने নিজ जना কোন মহাজনে अथाइया दिले तुमी পাঠাইয়া দিলে তুমি पाठाइया दिले तुमी পাঠাইয়া দিলে তুমি भक्ति विनोद ठाकुर की जय। राधानाथ स्वामी महाराज की जय। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दिगसे करुणा करी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी देह पद छाया शोधे आमाय देह पद छाया शोधे माया देह पद छाया शोधे आमाय देह पद छाया शोधे माया तुम्हार चरण धरी तुम्हार चरण धरे तुम्हार चरण धरी तुम्हार चरण धरे तुम्हार चरण धरी तुम्हारा चरण धरी तुम्हारा चरण धरे तुम्हारा चरण धरे छाया वेद में छाया दोष शोधि
छाया गुण देह दासे छाया भेदादो में क्षय दोष शोधि क्षय गुण देह दासे छाया बेगदो में छाया दोष शोधि छाया गुण देह दासे छाया बेगदो में क्षय दोष शोधि क्षय गुण देह दासे छाया सतसंग देह हमारे छाया सत्संग देह है हमारे छाया सतसंग देह हमारे छाया सत्संग देह है हमारे বসেছি সঙ্গের আসে 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 একাকে আমার নাহি পায়াবার হরি নাম সংকীর্তনে একাকে আমার নাহি পায়াবার হরি নাম সংকীর্তনে একাকে আমার নাহি পায়াবার हरि नाम संकीर्तने एकाकी हमारा नहीं पाया बारा हरि नाम संकीर्तने তুমি কৃপা করে শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করে শতবিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করে শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করে শতবিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে 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 দেহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली 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 भाई तव पाछे पाछे भाई तव पाछे भाई तव पाछे पाछे भाई तव पाछे पाछे
धाई तव पाछे पाछे धाई तव पाछे पाछे धाई तव पाछे पाछे धाई तव पाछे पाछे। श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। So Hare Krishna, now devotees can stand. We'll have पुष्पांजलि. सब खड़े हो सकते हैं. अभी पुष्पांजलि होगी. आप लोग को फूल दिए जाएंगे, उसको 3 भाग में विभाजित करना है. ओम अज्ञाना तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवासभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वला प्रेमाढ्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा
विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौरा किशोराय साक्षा वैराग्यमूर्तये विप्रलंब रसांभोदे पदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पा तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयता सुरतौ पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनो दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमध श्रीमान रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमान राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रास रसारंभे वंशीवट तटस्थिता कर्षण वेणो सुनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तुना तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी जो हाथ में आपके फूल हैं उनको 3 भागों में भाग कर लीजिए। उसमें से एक भाग अभी हम लोग पुष्पांजलि देंगे मंत्र बोलने के बाद। नमो
विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने एष पुष्पांजलि समर्पयामि। पहले प्रभु जी फिर माता जी से, प्रभु जी अर्पण कर दें फिर माता जी से। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने एष पुष्पांजलि समर्पयामि। दूसरा वाला भाग है वो अर्पण कर दीजिए और फिर लास्ट में तीसरा। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने एष पुष्पांजलि समर्पयामि। हरे कृष्ण। करता इधर इधर इधर। His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki, His Holiness Radhanath Swami Maharaj Vyasa Puja Maha Mahotsav ki, Srila Prabhupada ki. Samsara dava nalalida loka Tranaya karunya ghana ghanatva Aradava nalalida loka Tranaya karunya Samsara dava nalalida loka Tanaya karunya ghana ghanatva Samsara dava nalalida loka Tranaya karunya Praptasya kalyana gunarnavasya Bande guru shri charanaravinda Praptasya kalyana gunarnavasya
वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना महाप्रभो कीर्तनस्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकं श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा रोमाञ्चकं श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा श्रीविग्रहाराधन नित्यनारा शृङ्गारतन्मान्दिरमर्जनादो श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतान्मान्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्ता सनियञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा युक्तस्य भक्ता स्तनयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादन्नातृप्ता हरिभक्तसङ्घा चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वाद्वन्नतृप्तान् हरिभक्तसङ्गा हृद्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा हृद्वैव तृप्ते भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना श्रीराधिका माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतिक्षणा स्वदनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा प्रतीक्षणास्वदनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा निकुञ्जयो नारतिकेलिसेदा यायालिभिर्योक्तिरपेक्षणीया निकुञ्जयो नारतिकेलिसेद्य गालिभिर्योक्तिरपेक्षणीया तत्र ते दक्षदतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा तत्र तिदक्षतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा
साक्षाधरित्वेन समर्थशास्त्रये उक्तस्तथा वायत एव सद्भिः साक्षाधरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा वायत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा किन्तु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वंशस्य यशस्ते सन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा ध्यायस्तु यस्य श्री सन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दे वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा वन्दे गुरो श्री वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी निति नामिने विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामी निति नामिने विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare,
Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jayo Nitai Gauranga Jai Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jai Gaura Hare Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Jaya Nitai Gauranga Jai Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jai Gaura Hare Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Gaura Hare Nitai Gauranga 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 Gora Hare Gora Hare Nitai Gauranga 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 Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jai Gaur Hari Hari Gaur Hari Jai Gaur Hari Hari Jai Gaur Hari Jai Gaur Hari Hari Gaur Hari Jai Gaur Hari Hari Jai Gaur Hari Radhanath Swami Maharaj Vyasa Puja Mahamahotsav ki Om Vishnupad Paramahansa Parivrajkacharya Ashtottashata Shri His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya, beauty founder Acharya, savior of the whole world Srila Prabhupada ki Om Vishnupad Paramahansa Parivrajkacharya Ashtottashata His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj Srila Prabhupada ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की
मायापुर नवदीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, प्रभुपाद जन्म स्थान श्री कलकत्ता धाम की, गंगामयी की, यमुनामयी की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki, His Holiness Radhanath Swami Maharaj Vyasa